सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम हनुमान जी के फुल फेस वाले पार्ट को कलर करने वाले हैं। एंड इन्हें कलर करने के लिए मैंने यूज़ किया है डॉम्स के ऑयल पेस्टल्स का। एंड चलो देखते हैं कि कैसे मैंने इसे ड्रॉ किया है। एंड चलो स्टेप बाय स्टेप आपको भी बताता हूँ कि कैसे आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ डॉम्स के ऑयल पेस्टल्स से। सो फर्स्टली मैं नीडेड इरेजर से आउटलाइन को थोड़ा लाइट कर ले रहा हूँ। नाउ टाइम फॉर द कलरिंग। सो ब्राउन कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ फेस के ऊपर कलर करने के लिए। एंड फेस कलरिंग या फिर कहीं भी कलर ऑयल पेस्टल्स या फिर कोई भी मीडियम में कलर करने के लिए एक रूल होता है। बेसिकली हम डार्क टू लाइट जाएंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे रेफरेंस में कौन सा एरिया ज़्यादा डार्क है, कौन सा एरिया ज़्यादा लाइट है। बेसिकली डार्कर एरियाज़ में ब्राउन कलर को प्रेशर से अप्लाई करेंगे एंड लाइटर एरियाज़ में ब्राउन कलर को लाइट प्रेशर से अप्लाई करेंगे। एंड ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट्स को स्किप करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ब्राउन कलर कंप्लीट हो जाने के बाद हम फुल फेस में ऑरेंज कलर को अप्लाई करेंगे। एंड ऑरेंज कलर को भी हम उसी रूल से अप्लाई करेंगे जिस रूल से हमने ब्राउन कलर को अप्लाई किया था। बेसिकली डार्क पार्ट्स में प्रेशर लगा के एंड लाइट पार्ट्स में स्किप करके या फिर लाइट प्रेशर से। एंड अब फेस में एकदम से हाईलाइटेड पार्ट को ऑप्ट करने के लिए मैं सीज़र का यूज़ कर रहा हूँ। एंड सीज़र के बदले आप कोई शार्प चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा केयरफुली यूज़ कीजिएगा। तो अभी हनुमान जी के मुकुट को ड्रॉ करने के लिए मैं बेस लेयर के लिए ब्रश पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ।